Hello friends, welcome to our new video. If you guys are new to our channel or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so let's see the today's problem. The today's problem is monster pen. Okay, so let's try to solve this problem. Okay, so here we have given a problem statement. The problem statement is there are some monsters troubling Newton. He wants to get rid of as many monsters as possible. Coincidentally, the monsters also don't like each other. So Newton got an idea as he gathered all n monsters together in a pit. Okay, now all the monsters started attacking each other. They all have some health, and the health of the ith monster is hi. Okay, and the monster dies when its health becomes less than 1. Okay, and when a monster attacks another monsters, the health of monster is attacked is reduced by amount that is equal to the health of the attacking monster. Okay, since a single monster will always remain alive in the end, find out the minimum possible health of the uh, that alive monster. Okay, so in input we have given a single integer, that is n, and in the second line contains n space separated integers, that is h1 h2 up to hn. Okay, and in this problem we have to find the minimum possible health of the last alive monster. Okay, so in this problem what we can do, we uh, there are n monsters. Okay, and uh, and in these n monsters a monster dies when its health becomes less than 0. Okay, so जब भी monster की जो health है वो once less than अगर एक से कम रहती है, that means बी less than 1 रहती है, तो वो monster हम कंसिडर करेंगे कि वो डाइड हो चुका है. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको इनपुट दिया है और उसका आउटपुट दिया है. ओके, सो एंड okay, so the first monster will attack and kill all the monsters. Okay, this is the sample input and their output. Okay, so uh, okay, so to solve this problem today, here we are going to discuss the three approaches. Okay, to solve this problem. Okay, so to solve this problem, what we can do, first, mm, the first approach is simply what we can do, we can calculate the GCD. Okay, we can find the greatest common divisor number. Okay, by calculating the GCD we can find the output. Okay, in the second approach, what we can do, in second approach we can do using Q. Okay, we can solve this using Q. This is second approach. Okay, and in third approach we can solve this by using simple brute force approach. Okay, so what we can do, let's try to understand these approaches. Okay, so here we'll discuss the first approach. Okay, so the first approach. Okay, in first approach we'll simply find the GCD and we'll. Okay, so in this approach what we can do, simply first we'll take the input from the user, that is one number and one array. Okay, we'll take this input. Okay, after that what we can do, we'll simply find the GCD. Okay, greatest common divisor. Okay, and after here to calculate the GCD, we'll write one function, to calculate the GCD, and simply then we'll call the GCD
in main function with array elements. Okay, elements. Okay, and simply print output. Okay, so this is a very simple approach to solve this problem. Okay, so now let's try to understand the second approach. Okay, in second approach we can solve this using queue. Okay, so in this approach what we can do, first we'll take uh, first we'll take input, that is n. Okay, n को input लेंगे. Okay, and after that we'll initialize, we'll use the priority queue. Okay, initialize priority queue, and then we'll add the what we can say array. Let's suppose this is array elements, or let's in queue. Okay, so elements को हम queue में add कर देंगे. Okay, after that what we can do, first elements को queue में add कर देंगे. Okay, then simply what we can do, we'll remove the elements. That means we'll what we can say, we'll remove the elements from the front. Okay, in queue. Okay, so for that removes first element from front. Okay, so for that we'll use the poll method of queue. Okay, poll method use करके हम first element को remove करेंगे. After that we'll remove the second element as well. second element को भी हम क्या करेंगे, second element को भी remove करेंगे using same poll method. Okay, after that what we can do, we'll check that here we'll check, यहाँ पे हमने जो नंबर्स रिमूव किए उसका मॉडुलस निकालेंगे हम. दैट इज जो सेकंड नंबर हमने रिमूव किया वो, और फर्स्ट second number modulus first number which we have removed. We'll check if this number is equals to 0 or not. So for that we have to write the condition, that is if it is not equals to 0. Okay, and if it is not equals to 0, then simply add it to queue. Add the result of this operation, that is second number which we have removed modulus first number in queue. ओके, सो अगर इसका मॉडुलस अगर 0 नहीं रहता है तो इसका जो रिजल्ट है ये मॉडुलस ऑपरेशन का वो हम क्यू में ऐड कर देंगे. ओके, एंड सिंपली हम क्या कर देंगे, एंड में हम और एक एलिमेंट ऐड करेंगे क्यू में. वो कौन सा, जो फर्स्ट एलिमेंट हमने रिमूव किया था. ओके, बिफोर दैट आफ्टर डूइंग दिस ऑल दिस ऑपरेशन व्हाट वी कैन डू, which is correct. Okay, so यहाँ पे ऐड करेंगे उस फर्स्ट एलिमेंट को जो हमने रिमूव किया था. ओके, एंड एट द एंड में हम क्या करेंगे, जो पीक एलिमेंट रहेगा उसको प्रिंट करेंगे पीक एलिमेंट को. Okay, so we'll get our output. Okay, so this is the second approach, okay, to solve this problem. Okay, and जो थर्ड अप्रोच है वो थर्ड अप्रोच में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज जो थर्ड अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, पहले यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर और एक एरे. ओके, आफ्टर दैट
हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे। ओके, एरे को सॉर्ट करेंगे। आफ्टर दैट सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अ, यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो एरे का एलिमेंट है, दैट इज लेट्स सपोज एरे ऑफ आई, जो एरे का एलिमेंट्स है वो हम चेक करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल्स टू array of I minus 1। ओके, सो फॉर दैट हम जो ये इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए फॉर लूप जो चलाएंगे, वो हम I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो एलिमेंट्स। ओके, दो एलिमेंट्स, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हमको कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई माइनस वन। और अगर वो दोनों सेम नहीं है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपना लॉजिक है उसको हम इसके अंदर रिटर्न कर देंगे। दैट इज, यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज एरे ऑफ आई, इफ इट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ दिस इज ऑल्सो एरे, इफ इट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस वन। ओके, जो एरे ऑफ आई है अगर वो ग्रेटर देन आई माइनस वन, दैट मीन्स जो एलिमेंट है वो अगर उसके प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशनल। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को मॉडुलस करेंगे एरे ऑफ आई माइनस वन से। ओके, एरे ऑफ आई मॉडुलस एरे ऑफ आई माइनस वन। और अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर जीरो आती है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो रहती है तो हम एरे ऑफ आई माइनस वन रिटर्न कर देंगे। ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये रिटर्न कर देंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज एरे ऑफ आई मॉडुलस एरे ऑफ आई माइनस वन। ओके, ये हो गई। और एक एल्स में और एक कंडीशन हम लिखेंगे, दैट इज इफ अगर एरे ऑफ आई जो है वो अगर लेस देन एरे ऑफ आई माइनस वन है। पहले हमने चेक किया कि अगर एरे का जो एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस उसके प्रीवियस एलिमेंट से अगर बड़ा है तो। और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जो एरे का एलिमेंट है वो अगर अपने प्रीवियस से छोटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके इस ये जो ऑपरेशन है इसका उल्टा ऑपरेशन करेंगे, दैट इज हम क्या करेंगे, और इसमें इसको हम जो इसको हम स्टोर कर देंगे, दैट इज एरे ऑफ आई में। ओके, और इसको इसका जो रिजल्ट है इसको हम स्टोर कर देंगे एरे ऑफ आई माइनस वन में। ओके, और यहाँ पे भी हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज एरे ऑफ आई माइनस वन मॉडुलस एरे ऑफ आई। ओके, ये ऑपरेशन इसके उल्टा करेंगे, यहाँ पे हमने एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ आई माइनस वन किया था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एरे का जो एलिमेंट है वो अगर उसके प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो हम सिंपली एरे ऑफ जो उसका प्रीवियस एलिमेंट मॉड करंट एलिमेंट कर देंगे। ओके, और अगर इसका रिजल्ट अगर जीरो आता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को रिटर्न कर देंगे। ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है ये इसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज ये वाला। ओके, और सिंपली हम क्या करेंगे, अभी ये रिजल्ट से हमको क्या होगा, हमको यहाँ पे वो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो एंड एट द एंड में हम सिंपली प्रिंट करेंगे एरे ऑफ एन माइनस वन को प्रिंट कर देंगे, सो सो दैट वी कैन गेट आवर आउटपुट। ओके, ओके, सो ओके, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ एन माइनस वन क्यों करेंगे, क्योंकि जो सॉर्ट करने के बाद एरे को अगर लेट सपोज एरे की साइज फोर रहेगी तो ये जो कंडीशन है वो थ्री तक ही प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो एरे की साइज एट द एंड थ्री होगी, सो थ्री माइनस वन करेंगे हम तो हमें मिलेगा टू। ओके, सो दिस इज द आउटपुट।
So like this approach works. Okay, so now what we can do, uh, let's try to write the code for this problem. Okay, so okay, so uh, first approach try करते हैं. Okay, so GCD. Okay, so first GCD फाइंड करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Okay, so फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट यूजर से इनपुट लेना है हमें. ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्कैनर क्लास लिखेंगे. स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ओके, न्यू स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन. ओके, सो नेक्स्ट दो नंबर हमको यूजर से इनपुट लेना है. लेट सपोज इन एक नंबर लेना है और एक एरे लेना है. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे, दैट इज इंटीजर n इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, आफ्टर दैट लेट सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से. ओके, उसके बाद हम अभी यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे हम. लेट सपोज इंटीजर एरे देन न्यू इंट एंड उसकी साइज दे देंगे, दैट इज n. ओके, आफ्टर दैट we'll write one for loop for integer I equals to 0, then I is less than n I plus plus. After that, inside this for loop we'll write array of I equals to SC dot next int. ओके, सो ये array के एलिमेंट्स को भी इनपुट ले लिया. अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम. ओके, दैट इज GCD फाइंड करने के लिए. सो स्टैटिक इंटीजर GCD okay, or we'll give the name GCD and inside this इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर पास करेंगे GCD फाइंड करने के लिए. लेट्स सपोज इंटीजर A and B. ओके, एंड हम चेक करेंगे अगर सेकंड जो एलिमेंट है तो उसके लिए इफ अगर वो 0 रहता है उसकी वैल्यू, इफ B इक्वल्स टू 0, देन सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न A को रिटर्न कर देंगे. ओके, एंड एट द एंड सिंपली हम GCD रिटर्न कर देंगे. ओके, सो फॉर दैट हम रिकर्सिव कॉल करेंगे फंक्शन को, दैट इज GCD ऑफ, और इसके अंदर GCD फाइंड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फाइंड देंगे B एंड A मॉडुलस B. ओके, सो बाय यूजिंग दिस वी कैन गेट द GCD. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, here we'll write one for loop. Okay, so inside this for loop, okay, we'll write integer I equals to let's suppose we'll start it from 1, then I less than n and I plus plus. Okay, after that inside this for loop, what we can do, simply we'll write answer equals to, and here we'll call the GCD function, that is greatest common divisor. Okay, and inside this we'll simply write answer, and what we can get here, that is array of I. Okay, after that here simply we'll print the answer. So system dot out dot println and we'll print answer. Okay, so we have written the code for the first approach. Let's try to run this code. So I'll copy this input, let's paste it here, click on run, and let's see whether this works or not. Okay, output is showing incorrect output is showing. Why the output is incorrect?
array of I. लेट्स सपोज इसको 0 करके देखते हैं. Okay, now it works. It's showing 2. Now let's try for the second. What you can see, let's copy this and let's paste it and let's click on run. Output for this should be 5. Okay, so let's see. Okay, you can see the output is 5, which is correct. Okay, now let's try to submit this code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit. Now the test cases are running. Okay, so you can see that all the test cases has been passed. Okay, so this is the first approach to solve this problem. Okay, so let's see the second approach, which is by using the queue. Okay, second approach try karte hai. Okay, for that first I'll write the scanner class to take the input. So I'll write scanner equals to new scanner system.in. Okay, after that what I can do, I'll take one number, that is integer n equals to sc dot next int. Okay, we have taken one number. Okay, now we'll initialize the queue. For that I'll write queue. Okay, and integer. Okay, and I'll give the name for this queue. So let's suppose we'll give the name monster. Okay, we'll give the name monster, then new priority queue. Priority queue. Okay, so we are going to use the priority queue. Okay, now I'll write the for loop so that we can add the elements in this queue. Okay, so inside this I'll write integer I equals to 0, then I is less than n I plus plus. Okay, and inside this for loop, simply what I can do, I'll write monster dot add, and here I can write the elements which we are going to add now. So for that I'll write sc dot नेक्स्ट इंट. ओके, सो इस एरे में जो हम एलिमेंट्स इनपुट लेने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, इस क्यू में ऐड कर देंगे उस एलिमेंट को. ओके, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे, पहले फॉर लूप लेके फॉर लूप यूज करके पहले एरे के एलिमेंट्स इनपुट लेते, फिर उसके बाद क्यू में ऐड कर सकते थे. बट यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली फॉर लूप लिया और उसके अंदर डायरेक्टली जो हम अभी एलिमेंट्स लेने वाले वो हमने डायरेक्टली इस एक ही फॉर लूप में ऐड कर दिया है. ओके, इसमें. ओके, सो दैट हमको यहाँ पे फिर से ये फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, आई विल राइट while the queue, that is monster dot size. ओके, अगर ये जो क्यू है इसकी साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ओके, तो ही इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स रहेगी वो हम एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे अभी, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट मतलब रिमूव करेंगे क्यू में से. ओके, सो फॉर दैट what I can do, let's suppose I'll create here one variable, let's suppose minimum, and we'll store the removed elements in two different variables. Okay, so first I'll create one variable that is minimum. Okay, and now we'll store we'll remove the first element, okay, from front. Okay, so for that I'll write monster dot pole.
Okay, now we'll create another variable. Let's suppose we'll give the name second minimum. Okay, and inside this as well, here we did mistake, that is no, it is correct. It is monster. Okay, so here as well we'll write monster dot pole. Okay, so this will remove the element from the front. Okay, now I'll write one if condition, and in this condition we'll check, find the modulus of these two numbers. So I'll write second min mod min. Okay, and if it is not equals to 0, okay, then only we are going to execute the statements inside this if condition. Okay, so now here, if this condition satisfies, then simply we'll add monster dot add, and we'll add this result of this. Okay, so okay, now um, okay, now what I can do here, I will write monster डॉट, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट हमने रिमूव किया था और उसको ऐड करेंगे. सो यहाँ पे मिनिमम को ऐड कर देंगे हम. ओके, क्यू में. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अभी ये वाइल लूप हो गया. अभी वाइल लूप के बाहर हम सिंपली पिक एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे क्योंकि. ओके, सो सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओके, एंड इनसाइड दिस हम प्रिंट कर देंगे, दैट इज मॉन्स्टर डॉट पिक. ओके, सो we'll get the required output. Okay, now here I will write the packages, that is import java.io dot star and import java dot util dot star. Okay, okay, now we have written the code. So let's try to run this code. So click on run. Okay, okay, now our program is running. Okay, it executes. So now let's try to pass the input. So I'll go here. Okay, and let's see. Okay, so the input is 4 220 1030. Okay, so I'll pass the input here, that is first 4, then 2, then 20, then 10, and then 30. Okay, so the output for this should be 1. Let's see. Oh, sorry, 2. Okay, you can see the output is 2. Okay, here as well you can see the required output is 2. Okay, now what we can do, let's copy this code and let's see whether all the test cases will pass or not by using this approach. Okay, so I'll copy this. Let's go here, and here I'll comment out this first code. So first I'll comment out this. Okay, now after that I'll comment out this code as well inside the main. Okay, now here in main I will paste my code. Okay, now let's try to submit and let's see whether the all the test cases will pass or not. Okay, okay, you can see that by using this approach only, this approach as well, all the test cases has been passed. Okay, now let's try for the third approach. Okay, so for third approach, what I can do, I'll just remove this. Okay, okay, so here first I have taken one element. After that we'll declare one array equals to new int. We'll pass the size, then write the for loop for the array elements. So to 0, then I is less than n, then I plus plus. Okay, after that
inside this for loop, I'll write array of I equals to sc dot next int. Okay, so we have taken the inputs from the array. Okay, now we'll sort this array by using arrays dot sort method. Okay, and inside this we'll pass the array name. Okay, after that we'll what we can do, we'll write the for loop. Okay, so in this approach what we can do, we are going to check the adjacent elements. Okay, so for that I will start the loop from 1. Okay, because we'll check the array elements with its previous element. So the first index element is checked with zeroth index elements. For that we have started this loop from 1. Okay, so and here I'll write I less than n, then I plus plus. Okay, so inside this for loop what we can do, we'll write one while loop and we'll check that if the adjacent elements are same or not. So we have to check that we don't if I is array of I is not equals to array of I minus 1. ओके वो दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए. ओके अगर वो सेम नहीं है तो इस लूप के अंदर की जो भी कंडीशंस है उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम. ओके सो इसके अंदर हम अभी क्या लिखेंगे, इफ यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, दैट इज जो एरे का एलिमेंट है, लेट सपोज ये 1 है, 1 जीरोथ इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट से ग्रेटर है या लेस है. ओके वो कंडीशन हमको यहाँ पे लिखनी है. ओके सो फॉर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस 1. ओके ये कंडीशन हम चेक करेंगे. ओके एंड इनसाइड दिस कंडीशन यहाँ पे हम मॉडुलस निकालेंगे, एरे ऑफ आई मॉडुलस एरे ऑफ आई माइनस 1. ओके दोनों का मॉडुलस निकालेंगे और उसको एरे ऑफ आई में स्टोर कर देंगे. ओके सो हियर विल राइट एरे ऑफ आई equals to array of I modulus it is array not a, this is arr, this is as well arr 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 arr. Okay so we are going to check that if array of I modulus array of I minus 1 is इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे और अगर इसका मॉडुलस 0 आता है तो सिंपली हम एरे ऑफ आई माइनस 1 को रिटर्न कर देंगे. ओके और नहीं तो ये रिटर्न कर देंगे, दैट इज एरे ऑफ आई मॉडुलस एरे ऑफ आई माइनस 1. ओके इसको रिटर्न कर देंगे माइनस 1 एंड एल्स इफ. ओके और इसके अंदर हम पास करेंगे दैट इज एरे ऑफ इसके अंदर अभी हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि एरे का जो एलिमेंट है उसके प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर रहेगा. अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एरे का एलिमेंट्स उसके जो एडजेसेंट प्रीवियस एलिमेंट है उससे लेस देन है क्या. ओके और अगर वो लेस देन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई में 1 आई माइनस 1 में उसको स्टोर कर देंगे और यहाँ पे हम एज वेल यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसके वाइस वर्सा करेंगे. सो यहाँ पे आई माइनस 1 मॉडुलस एरे ऑफ आई कर देंगे. ओके एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0 देन सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ आई को रिटर्न कर देंगे. ओके एल्स नहीं तो हम ये रिटर्न कर देंगे. ओके ओके सो array of I minus 1 modulus array of I equals to 0. देन हम array of I को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इसका जो रिजल्ट है इस ऑपरेशन का मॉडुलस का वो उसको रिटर्न कर देंगे. ओके
Now we have written the code. Now we'll print. So that I'll write here system dot out dot println, and inside this हम क्या करेंगे, array of n-1 को प्रिंट कर देंगे. ओके, सो दैट हमको इसका रिजल्ट और आउटपुट मिल जाएगा. ओके ओके अरे okay, we have written our code. Now let's click on run and let's see whether this approach works or not. So click on run. Okay, so we'll give the input. Let's suppose we'll give the 4, then 5, 5, 5 and 5. So output for this sample input should be 5. Let's see. Okay, so you can see that output is 5. Now let's run again. Okay, so we'll give the first sample input, that is 4, then 2, 20, 10 and 30. So for output for this problem should be 2. Okay, so you can see here output is 2, which is correct. Okay, now what we can do, let's copy this code and let's see whether all the test cases will pass or not. Okay, okay, so I have copied this code. I'll just comment out this second previous code and let's paste our code here. Okay, and let's click on submit. Okay, so let's see whether all the test cases will pass or not using this approach. Okay, so you can see that all the test cases has been passed by using this approach as well. Okay, so that's it in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.